is physical quantities and measurement. Before moving towards the topic physical quantities and measurement, first we have to discuss something about science and something about physics. So the first topic is what is science. फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो इसका पहला पार्ट है व्हाट इज साइंस. डियर स्टूडेंट्स, वी आर लिविंग इन द यूनिवर्स एंड मैन ऑलवेज बी इंस्पायर्ड बाय द वंडर ऑफ द नेचर. ही ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द नेचर. यानी कि जिस कायनात पे हम रह रहे हैं, अल्लाह ताला की जो बनाई हुई कायनात है, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों को इंसान से मुख्फी रखा है, पोशीदा रखा है और उस पर हमें रिसर्च करने के लिए बाकायदा तौर पे हमारा कुरान पाक भी और हमारी हदीस के अंदर से भी ये कहा गया है कि अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं. तो जो इंसान है वो हमेशा नेचर की रियलिटी और उसके बारे में ट्रुथ को जानना चाहता है. Woman observes the different things through the observation and the calculation or through the observations and experiment. That knowledge which is obtained, science को हम define करेंगे, the knowledge which is obtained through observation and experiments is called science. The knowledge which is obtained through observation and experiment is known as science. जैसे हम अपनी सराउंडिंग में जिसमें रह रहे हैं, छोटा बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको शऊर आता है, तो वो अपनी सराउंडिंग की मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उनके बारे में सीखने की कोशिश करता है और अपनी लाइफ में हम डिफरेंट चीज़ों को लर्न करने के लिए हम थ्रू डिफरेंट प्रैक्टिकल्स जो है वो हम गुजरते हैं. ये जो नॉलेज विच इज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड साइंस. अब जो साइंस है, बेसिकली द वर्ड साइंस इज obtained from a Greek word, from a Latin word scientia. It is obtained from a word scientia, which means the knowledge. तो साइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? जो वर्ड साइंस है, scientia, a Latin word scientia. Scientia का मतलब यह है knowledge. Scientia का मतलब क्या है? Knowledge. So the basic जो word आपका है ये साइंस, ये लैटिन वर्ड से है. अब बिफोर 16th century, जिसमें the study of all the aspects of the surrounding of the nature, उसके लिए ना तो वर्ड फिजिक्स यूज होता था, ना वर्ड केमिस्ट्री, ना वर्ड बायोलॉजी, बल्कि उसके लिए जो वर्ड यूज होता था वो होता था नेचुरल फिलॉसफी. बिफोर 16th century, a common word is used for the study of nature is called natural philosophy. फर्स्ट जो आपके पास था, बिफोर द साइंस, बिफोर फिजिक्स, बिफोर केमिस्ट्री,
तो बाद में हमने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेज जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये सारी जो है दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी क्या था? नेचुरल फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ द नेचर। उसमें हम उसके लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों के बारे में शुरू में जब हम स्टडी करते थे तो उसके लिए कोई भी कैटेगरी नहीं थी, बल्कि उस सारी स्टडी को हमने क्या नाम दिया था? नेचुरल फिलॉसफी का। लेकिन 16th सेंचुरी के बाद जब आपकी मॉडर्न फिजिक्स जो आपकी डेवलप हुई 17th सेंचुरी में, उसकी डेवलपमेंट जो स्टार्ट होना शुरू हुई, तो दिस नेचुरल फिलॉसफी इज डिवाइडेड। नेचुरल is divided into two categories। दो categories में इसको डिफाइन किया गया है। One is called physical science, one is known as physical science, और जो दूसरी थी उसको बायोलॉजिकल साइंस कहा है। दूसरी क्या थी? बायोलॉजिकल साइंस। जो फिजिकल साइंस थी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए थी, नॉन लिविंग मटेरियल्स या ऑर्गेनिजम्स। और ये जो बायोलॉजिकल साइंस थी ये किसके लिए थी? लिविंग मटेरियल्स के लिए थी। अब जो नॉन लिविंग है आपकी फिजिक्स जो है, फिजिक्स इस जो नॉन लिविंग के लिए जो साइंस थी या फिजिकल साइंस थी, इसको फर्दर 5 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया। और वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो 5 कैटेगरीज जो आपकी विच डिस्क्राइब्स या विच आर द पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल science. First is physics, second is आपकी जो थी वो chemistry, third is meteorology, astronomy, fourth is geology, fourth क्या थी आपकी? geology, and fifth one is meteorology। फिफ्थ आपकी थी वो क्या थी? मेट्रोलॉजी। जो नेचुरल फिलॉसफी थी, नेचुरल फिलॉसफी द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स थे, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स थे, जब हम उनको स्टडी करते थे बिफोर 16th सेंचुरी, the study of the natural effect is known as natural philosophy, which is further categorized into 2 branches. One is the physical science and other is biological science. Physical science, that was a category of non-living materials, and biological science was a category of living materials. Now the today topic, the basic, actually we are talking about the physics. The subject is physics. And the physical science is further categorized, further divided into 5 main branches. One is physics, the other is chemistry, third is astronomy, fourth is geology, G-E-O-L-O-G-Y, geology, and fifth one is meteorology. Now what is physics? We are moving towards physics, the branch of science in which we study about matter, energy, and their mutual relationship.
and their mutual relationship. फिजिक्स को जो सेकंड डेफिनेशन है, जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन है, वो आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं. फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट. फिजिक्स is also called the science of measurement. Physics is also called science of measurement. Okay. This definition, this is related to the measurement, and we will discuss later when we will discuss the topic measurement, especially जब हम measurement को discuss करेंगे तो फिर हम इस definition को भी थोड़ा सा elaborate करेंगे. What is the meaning of this statement? But moving towards the first definition, which आपकी जो book में लिखी हुई है, the branch of science in which we study about matter, energy, and their mutual relationship. अब the basic problem of the student is what is the matter and what is energy and how they are interrelated with each other. How we can define their mutual relationship, how they are mutually related. So first, the matter. What is matter? हम define करेंगे matter को. Matter. What is matter? Okay. The word matter was defined फर्स्ट टाइम बाय द ग्रीक्स. जो मैटर का कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसने हमें दिया? ग्रीक्स ने दिया. एंड ग्रीक्स was the first who defined the matter, and according to the Greeks, matter was made up of the atoms or fundamental particles which cannot be further divided, which cannot further be broken into the parts. तो matter first जो इसका concept था, first concept of matter was given by the Greeks. अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि physics, the word science originated from the word scientia, and scientia is a Latin word. तो यहाँ पे जो matter है, matter का जो first concept था, that was given by the Greeks. और according to the Greeks, matter is composed of, is formed by the fundamental particles, and such particles which cannot be broken further apart, जिनको हम दोबारा मजीद हम split नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? Matter कहलाते हैं. तो मैटर क्या है? मैटर is composed by the fundamental particles which cannot be broken. Which cannot be broken. That statement of the matter was given by the Greeks. केमिस्ट्री में आप मैटर की डेफिनेशन शायद थोड़ा अलग पढ़ें, लेकिन फिजिक्स में यानी कि वो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स, इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स, जिनको हम ब्रोक नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ नहीं सकते. सेकंड आ गई एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी को आप डिफाइन करते हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. नाउ वी हैव टू प्रूव, we have to show the mutual relationship of matter and energy. Sometimes students question करते हैं कि सर ये कैसे mutually interrelated होते हैं. देखिए, in order to change the state of the matter,
from solid to liquid or from liquid to gas, we need some amount of energy. We need some amount of energy. यानी कि मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, एक स्टेट से दूसरी पे लेके जाने के लिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से प्लाज्मा में जाए, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। या हम मैटर की स्टेट को कन्वर्सली आ जाए, आप गैस से जो है लिक्विड में आते हैं तो आप उससे एनर्जी लेंगे, उससे क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। तो मैटर एंड एनर्जी आर रिलेटेड इन सच अ वे, यहाँ पे द वर्ड म्यूचुअल मीन्स कि in order to change the state of the matter, in order to change the state of matter, we need some amount of energy. जैसे फर्ज करें आपके पास आइस का ब्लॉक है, we have a block of ice. In order to convert the ice into water, we need some amount of heat energy. हम उसको हीट अप करेंगे तो वो क्या होगी, उसमें कन्वर्ट होगी। तो म्यूचुअल रिलेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक फॉर्म से दूसरे में जाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। या आपके पास वाटर है, आप उसको स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जैसे स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, उसको हीट अप करना है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। या जैसे कोई चेयर पड़ी हुई है रूम में, in order to shift the chair from one point to another point, we need some amount of energy. तो ना सिर्फ मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, बल्कि मैटर को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्प्लेस करने के लिए we need some amount of energy. So that's why we use the term mutual relationship. So the branch of science in which we study about matter, energy and their mutual relationship is known as physics. उसके बाद जो next topic है वो आपका branches of physics है, उनको हम discuss भी नहीं करेंगे। Next we are moving towards the physical quantities. Towards the physical quantities. What are the physical quantities? देखें, वो quantities जिनको हम measure कर सकते हैं। The quantities, all the measurable quantities are known as physical quantities. Non-physical quantities भी exist करती हैं नेचर के अंदर, और फिजिकल भी हम इनको डिस्कस करेंगे। देखें, लेट्स सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिफाइन करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, those quantities which can be measured are called physical quantities. तमाम वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, such quantities are called physical quantities. Such quantities are called physical quantities. अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जो कि आपका यहाँ पे टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सम क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम सिर्फ इन सेंटेंस डिफाइन कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, which can be described in a sentence, but they cannot be measured. Such quantities are known as non-physical quantities. Quantities which cannot be measured, which cannot be measured are called non-physical quantities. Physical quantities की example में length of room, we can measure the length of room, mass of book, distance between 2 points, इसी तरह से और जो है नंबर ऑफ स्टार्स गैलेक्सीज के अंदर जो है। तो जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, such quantities are known as physical quantities. Some quantities cannot be measured. हम उनको simply sentence में define करते हैं,
वो नॉन फिजिकल कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, आप कहते हैं मुझे बहुत सख्त दर्द हो रहा है, बट वी कैन नॉट मेजर द पेन, इंटेंसिटी ऑफ पेन कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनीबॉडी। लव, मुझे बहुत प्यार आ रहा है, आप कहीं पे बाहर हैं, 10-15 दिनों के बाद वापस घर आते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं हाउ मच आई एम हैप्पी। तो ये जो फीलिंग्स, इमोशंस, लव, पेन, एंगर, इनको सिर्फ हम सेंटेंस में डिफाइन करेंगे, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। और ऐसी क्वांटिटीज, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। अब हमारा जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, basic two things are required in order to measure the physical quantities. There are two characteristics. The first is numerical value. Second is proper unit. In order to measure the physical quantities, we need two things. Basically, which are the common requirement of all the physical quantities. Two things are commonly required. One is numerical value and the second is proper unit. Let's suppose, mostly हमारे घरों में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, आपका छोटा भाई होगा, जो भी होगा, उसको घर वाले बेचते हैं, उसे कहते हैं जाओ छोटे ये जाके बाजार से दही ले आओ, 2 किलो दही ले आओ। अब वो जाता है दुकानदार को, ये कहता है कि मुझे 2 दे दो, तो दुकानदार जो है उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा, उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। या उससे जाके ये कहता है कि दही दे दो, तो दुकानदार उससे अगला क्वेश्चन करेगा कि भाई कितना चाहिए। इसलिए एक होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। 2 kg ऑफ योगर्ट में 2 is the numerical value, 2 is the numerical value and kg is the proper unit, kg is the proper unit. So in order to represent the physical quantities, there are 2 basic characteristics which are common. The first one is the numerical value. In order to measure the physical quantities, we need the numerical number, numerical value, and the second is the proper unit. Let's suppose someone is talking about the distance, और वो ये कहे कि मैं 2 किलो भागा हूं, तो क्या ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा? नो। अगर वो ये कहेगा कि 2 किलोमीटर, या मैंने रनिंग किया 4 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, या 500 मीटर की है, तो जब उसकी प्रॉपर यूनिट को मेंशन करेगा तो तब वो क्वांटिटी डिफाइन होगी, अदरवाइज वो क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए वी नीड 2 बेसिक कॉमन फैक्टर्स, या 2 जो बेसिक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू विल डिफाइन द मैग्नीट्यूड, ये उसकी कीमत को बताएगा, उसके अदद को बताएगा, अददी वैल्यू को बताएगा। एंड सेकेंडली प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट जो है उस क्वांटिटी को डिफाइन करेगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ, either we will use the unit meter, centimeter, decimeter, kilometer, etc. Or when we are talking about the time, we will use the unit second, minute or hour. हम कभी भी नहीं कह सकते, कोई आपसे पूछते हैं कि क्या टाइम हुआ, आप कहते हैं 2 किलो हो गए, नहीं, हम कहेंगे कि 2 बज गए हैं, 2 कितना टाइम लगा आपका, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। तो जब आप मिनट, सेकंड या हार्स को आप यूज करेंगे तो इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम। तो यूनिट जो है उस क्वांटिटी को डिफाइन करती है। इसी तरह से जो उसकी सेकंड चीज जो जिसको फर्स्ट हमने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें उसकी अददी कीमत का पता चलेगा कि कितनी है वो, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वर्थ क्या है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वन इज बेस एंड अदर इज डिराइव्ड। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेसन में जो है वो डिस्कस करेंगे, डिराइव्ड और बेस क्वांटिटीज को।